Hi guys, so we'll be starting with lesson 24, that is the topic name is liquidation under IBC. Now let's see, in company liquidation, we're talking about a company getting liquidated. Assets are being sold, money is being realized and all the money will further be distributed. Now जब भी company liquidation होता है, let's see where it is covered under IBC. First of all, it relates to companies. So कौन से पार्ट में होगा ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के कौन से पार्ट में होगा? इफ इट रिलेट्स टू कंपनीज इट विल बी इन पार्ट 2 बिकॉज इट डील्स विथ इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेट्स. नाउ इन पार्ट 2 ऑल्सो देर इज फर्दर चैप्टर्स गिवन. फ्रॉम दीज चैप्टर्स कैन यू टेल मी लिक्विडेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से वाले पार्ट के अंदर? कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस. It is in part chapter 3. So it is in part 2, that is insolvency of corporates, chapter 3, section 33 to section 54 is the topic for the day. Now let's see, जब भी ये chapter 3 कर रहे हैं, it's from section 3 to section 54. तो ये सारे sections हम लोग को पता होने चाहिए and we'll be going through each of them today. नाउ जब भी ये चालू कौन से सेक्शन से होता है? इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन. कि लिक्विडेशन प्रोसेस कब इनिशिएट होगा? इन आईबीसी वी ट्राई टू रिवाइव द कंपनी और ट्राई टू किल इट. आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ट्राई टू ensure that the company revives, rehabilitates, gets back to into functioning or trying to selling off the assets, that is liquidation. हम लोग क्या सेल ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं? So we first try to revive the company. In section 33 is saying when all the hopes are lost, when we could not revive it, कोई plan ही नहीं है, plan fail हो गया, debtor भी सुन नहीं रहा है, creditors भी सुन नहीं रहे हैं, तो then we start with बंद करो company with liquidating the company. So let's see section 33 का के बारे में बात करता है. Section 33 is saying that when is liquidation process. Section 33 talks about when is liquidation process initiated. तो सबसे पहले कोई प्लान ही नहीं बन पाया उसका, नो रेजोल्यूशन प्लान. सेकंड, बनाया था प्लान बट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया. कोर्ट बोले नहीं ये बहुत ही अनफीजिबल रैशनल प्लान है. नेक्स्ट, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, द क्रेडिटर्स ओनली फील दैट वी वांट द कंपनी टू बी शट डाउन एंड वी वांट आवर मनी बाय लिक्विडेटिंग और सेलिंग ऑफ द एसेट्स. और द क्रेडिटर डेटर को हम लोग ने बोरोवर को चांस दिया था, उसको बोले थे तुम्हारे रिलेटेड प्लान बनाएंगे, बट व्हाट हैपेंड इज द प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ही वाज वायलेटिंग, ही वाज नॉट लिसनिंग, देन कोर्ट ऑर्डर्स शट डाउन द कंपनी. नाउ जैसे ये लिक्विडेशन ऑर्डर आता है, डायरेक्टर सबका पोस्ट चले जाता है, दे आर डिस्चार्ज्ड, दे डोंट हैव एनी पावर्स और कोई फर्दर न्यू केसेस भी इसके ऊपर फाइल नहीं हो सकता है. नाउ टेल मी, अगर डायरेक्टर्स नहीं है जब लिक्विडेशन होता है तो पहली चीज किसको अपॉइंट करते होंगे हम लोग टू डू द लिक्विडेशन प्रोसेस? बिकॉज डायरेक्टर्स तो अभी रहे नहीं, दे आर डिस्चार्ज. हु इज इट? ओके, सो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ लिक्विडेशन वी अपॉइंट अ लिक्विडेटर इन द वेरी नेक्स्ट सेक्शन. सो 33 में लिखा था कि कब चालू होता है लिक्विडेशन, जब कोई प्लान नहीं बन पाया, क्रेडिटर डेटर ये लोग सब बोल रहे हैं कि बंद करो. नाउ वी अपॉइंट इन द वेरी नेक्स्ट सेक्शन वी टेल द लिक्विडेटर बॉस यू हैंडल इट. नाउ व्हेन द लिक्विडेटर कम्स, व्हाट डू यू थिंक ही मस्ट बी डूइंग? व्हाट इज हिज वर्क, व्हाट आर हिज पावर्स, व्हाट आर हिज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द लिक्विडेटर? इफ यू आर अपॉइंटेड to liquidate the assets of a company, what all will you do? So let's see what it is given, the duties of the liquidator. Now जैसे कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो सोचो मैं लिक्विडेटर हूँ, मैं अपॉइंट हुआ हूँ, आई विल से कि किस किस का पैसा बाकी है, कौन से एसेट्स है, एसेट सेल ऑफ करो, पैसा रियलाइज करो, डिस्ट्रीब्यूट करो फंड्स एंड देन go to the court to end the company, liquidate the company. So
Section 35 and 37 talk about duties of the liquidator. 35 talks specifically about the duties of the liquidator. He will, make a small report of what's happening in the company. अगर मैं जैसे अपॉइंट हुआ, I need to understand what's happening. So I make a preliminary report. I take custody of the assets. Most important, assets क्या है? He will call the creditors, contributories. He will tell everyone. He will maintain all the books of accounts. He will try to get as much information as possible. Let's see actually what is there. तो ये तुम्हारा लिक्विडेशन के थोड़े स्टेप्स हैं. नाउ जैसे लिक्विडेशन होता है, सबसे पहले प्रोफेशनल को कॉल करके बुलाते हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर. नाउ लिक्विडेटर मोमेंट ही कम्स इन, ही विल आस्क एवरीबडी दैट किस किस का पैसा बाकी आके मेरे को बताओ, तो जब एसेट्स बेचेंगे तो आपको दे देंगे. तो ही विल कॉल फॉर द क्लेम्स. अब क्लेम्स के लिए कॉल करेंगे हर एवरी पर्सन हु बिलीव्स दैट द कंपनी ओज देम मनी और उनको पैसा मिलना चाहिए, they all will apply. He will verify those claims. ऐसा नहीं कि जो भी मांगेगा उनको देते जाओ, वेरिफिकेशन होगा क्लेम्स का. एसेट्स का मेमोरेंडम बनेगा. प्रेपरेशन ऑफ एसेट मेमोरेंडम मीन्स व्हाट ऑल एसेट्स डू दे हैव, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स, बिकॉज एसेट्स की कस्टडी लेगा वो. he'll try to sell off. he'll फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट. कौन सी चीज़ों के ऊपर वो अपनी कस्टडी ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ही विल ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ऑल द कंपनीज एसेट्स. कैन ही गो एंड टेक द सब्सिडरीज एसेट्स? अगर होल्डिंग कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो क्या सब्सिडरी के एसेट्स बेच सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? नो. सो दैट कम्स अंडर एक्सक्लूजन्स. That certain things you cannot take custody of. Can I take assets of third parties? No. Can I take away the employees' provident fund, pension fund? Can I take custody of those? Now the liquidator will say कि नहीं, जो assets बेच सकते हम उसको हम लोग liquidating assets बोलेंगे. उसके अंदर क्या क्या एड लेस बेच सकते हैं हम लोग और क्या क्या हमें टच नहीं करना है. थर्ड पार्टी ने कोई एसेट्स हम लोग के पास में सेफ कीपिंग के लिए दिए थे, क्या हम उसको बेच सकते हैं? दे हैड केप्ट मूवेबल प्रॉपर्टी विथ अस एज कस्टडी विद द कंपनी, तो कैन आई सेल ऑफ दोज? अगेन नो. सो दोज आर इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू हैव अ टर्म ऑल्सो. व्हाट इज दैट टर्म कॉल्ड? एसेट्स आर केप्ट फॉर सेफ कस्टडी. वंस द पर्पज इज ओवर इट विल बी रिटर्न. So when goods have been kept to bailment with me, then those also I can't take because I'm not the owner of the goods. Then जो भी liquidation estate बनेगा फिर हम उसको बेचेंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, and that is called as a waterfall arrangement. जब डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, you tell me, अगर इक्विटी शेयर होल्डर सुबह में जल्दी आके सबसे आगे आके बैठ गया तो क्या उसको वहां से चालू करेंगे पेमेंट? No. So what happens is, first they make a list who are the priority people who should get. So there is a flow given that first the cost should be given, for secured creditors, then unsecured, then the preference, then the equity. So that is called as the waterfall arrangement, or how the distribution will go on. And in the end, when everything has been distributed, then they will apply to the court for dissolution order. Dissolution is that the company should be completely shut down. So let's see, ये liquidation estate होता क्या है? Liquidator आएगा, will try to get the liquidation estate. Liquidation estate is given under section 36. Liquidation estate is all the assets of the debtor. Simple. Is the assets of the debtor, corporate debtor, is called as the liquidation estate. अब liquidator will take control of those assets. Now he will take in fiduciary capacity as a matter of trust for benefit of all the creditors. Creditors की benefit के लिए उसके ऊपर acquire करेगा. वहाँ पे वो लोग ने ऑलरेडी लिस्ट दिया है कि कौन से पे
अपना कंट्रोल कर सकता है और कौन से पे कंट्रोल नहीं कर सकता है. सो दे हैव गिवन दैट ऑन विच ऑल कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन while making the liquidation estate. Tell me, कंपनी के tangible intangible property के ऊपर हम लोग acquisition कर सकते हैं? Will the liquidator take control of that? Movable, immovable, tangible, intangible, everything will be taken over. Wherever the corporate debtor has ownership rights, movable, immovable, tangible, intangible, anything which the court they have got. But can they take assets of third party which was kept in custody with the corporate debtor? For example, एक बैंक liquidate हो रही है और मैंने वहाँ पे मेरे गहने नहीं but let's say family members के गहने वहाँ पे होंगे और there must be some jewelry or I must have share certificates I must have given. So now this is kept as a bailment. So that they cannot take control of, possession of, but owned by third party. They have possession of it, but it is owned by me. They can't take control of that because it was kept in trust, bailment with them. Okay, which was kept as a collateral held by a financial service provider. किसी का returnable deposit, all of that was kept. Personal asset of any shareholder. So all of that you cannot take because it's not the company, is not the owner. Assets of any subsidiary, Indian or foreign subsidiary भी हम लोग नहीं ले सकते. Now, very very important, when liquidation goes on, okay, जब भी liquidation हो रहा है तभी fraud होने के chances है कि नहीं? I have personally seen in courts that there is a arguments by the creditors that the directors, the liquidators, they have colluded, they have done fraud, they have sold off the assets at less price, they have tried to create certain transactions, liquidation वाइंडिंग अप चालू हुआ उसके पहले ही वो लोग ने काफ़ी सारे रिलेटेड पार्टी को गुड्स दे दिए. इमेजिन, लेट्स टेक एन एग्जांपल. If I am the director of the company, would I come to know that the company is going in bad times and it might just hit bankruptcy? Yes or no? As a director, wouldn't I already have prior knowledge that I am going to hit the wall, that I am going to, my company might touch bankruptcy? So when I already know, I say before the liquidator takes charge, before the liquidator takes control, let me try to give away my assets to my relatives to distribute the assets and everything. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब भी ये बैंक्रप्सी फ्रॉड ना हो तो 3 से 4 चीज़ें हो सकती है. क्या हो सकता है? मैं कोई क्रेडिटर को पहले ही प्रेफरेंस दे दूँ. सोचो माई सिस्टर हैड ऑल्सो गिवन अ लोन एंड देयर वर थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स ऑल्सो. सो हु डू यू थिंक आई विल ट्राई टू गिव प्रेफरेंस टू वाइल पेइंग ऑफ? कंपनी डूब रही है, कंपनी को पेमेंट्स करने हैं, तो और मेरे रिलेटिव ने भी लोन दिया था और थर्ड पार्टीज ने भी दिया था. मैं किसको प्रेफरेंस देने की कोशिश करूंगा? रिलेटिव और थर्ड पर्सन. सो आई विल ट्राई टू गिव प्रेफरेंस, गिव अ एडवांटेज टू माय रिलेटिव. So what happens if the creditor, the third party creditor realizes, liquidator realizes that a preferential transaction has been done, that a preferential payment has been done, that a priority has been, undue priority has been given to a creditor, bringing others at disadvantage. This transaction is called as a preferential transaction which can be declared void, and all the benefits acquired by that third person, by that relative, will have to be reimbursed, given back to the company. Second, I do any transactions to defraud the creditors. कुछ भी transactions करता हूँ, structuring करता हूँ, alienation of assets, disruption. I try to handle the company in such a way that the creditors get nothing in the company. Fraud means with the intention to deceive. I do some transactions. Next, what I do, I try to give away the undervalued transactions. I can undervalue transactions and give the assets of the company for lesser charge to people. Let's take an example. This is talking about undervalued transactions. Now what I do is,
कंपनीज एसेट्स आई डिस्ट्रीब्यूट एज गिफ्ट्स टू माई रिलेटिव्स एट 1 रुपया लो ये मशीनरी लेके जाओ, 1 रुपया लो 10,000 रुपये दो ये गाड़ी लेके जाओ, तो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हो गए. तो दिस ऑल ब्रिंग्स द क्रेडिटर एट डिसएडवांटेज बिकॉज उनको कुछ मिलने वाला है नहीं, सब वैल्यूएबल एसेट्स तो बेच दिए मैंने बिफोर द लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्टिंग ऑल्सो. तो ये लोग ने क्या दिया है, टाइमलाइन दिया हुआ है. सी फॉर अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन देव ऑल डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. जब भी टाइमलाइन दिया ना यहाँ पे देव गिवन अ टाइमलाइन फॉर अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस and they've also given this timeline. In this timeline what they say, अगर related party के साथ में कर रहा हो तो 2 years prior and with others if I am doing this transaction it is 1 year prior to starting of this liquidation process. Let's understand. Liquidation process आज चालू हुआ, अब आज से लिक्विडेटर कंट्रोल में और क्रेडिटर्स लूज देयर पावर्स. जस्ट बिफोर दिस टाइम व्हेन आई नो दैट द कंपनी इज गोइंग टू हिट, आई ट्राई टू डू ट्रांजैक्शन विच विल डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, ट्राई टू गिव प्रेफरेंस टू द क्रेडिटर्स, ट्राई टू अंडर वैल्यू सर्टेन ट्रांजैक्शंस एंड ट्राई टू डिस्पोज ऑफ एसेट्स एट अंडर वैल्यू टू एनी रिलेटेड पार्टी. सो दीज ट्रांजैक्शंस happening prior to 2 months when 2 years when it comes to related party, and if it is not related to related party then 1 year prior. So iske pehle gaya to these cannot be declared, okay, because I might not have the intention. Now what they have given you, 4 transactions they have captured. These are important. Preferential transactions given under section 43, undervalue transactions, extortionate credit transactions. एक्सटॉर्टिनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या, एक्सटॉर्टिनेट का मतलब क्या है, एक्सटॉर्टिनेट मीन्स अनरीजनेबल, एक्सेसिव, अनरियलिस्टिक credit transactions. So imagine if my brother is there, what I do is I make him a creditor. I tell him that the company owes him 10 lakh rupees, 20 lakh rupees. My mother, the company owes them 50 lakh rupees. My sister, the company owes them 70 lakh rupees. Now these are all excessive credit transactions. They have taken the goods, and now, or the company has bought the goods from them. They are the suppliers. Company has taken goods from them on credit, and now we have to repay them. तो कंपनी की लायबिलिटी में इंक्रीज कर रहा हूँ. क्यों इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग को पेमेंट मिलेंगे. So I try to create an unreasonable credit transaction that, hello, assets have been bought from my sister and we owe them 1 crore. The credit will be like 1 crore and that too before us. ट्रांजैक्शन में मैंने प्रायोरिटी डेट उनका डाल दिया कि आपको लोन मैंने 7 तारीख को दिया था ना, मेरे सिस्टर के पास से मैंने 1 तारीख को लिया था, तो दे विल गेट प्रायोरिटी. सो एनीथिंग टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, fraudulent transactions. So they've all given here these sections. These are all frauds that can happen. So all these transactions can be declared. Orders can be passed by the adjudicating officers declaring these transactions to be void. एक बार ये हो गया, तब क्या होगा फिर नेक्स्ट, creditor, those transactions will be declared void and the money will be recovered if given to them. Next is the waterfall arrangement. In winding up, पैसे कैसे बटेगा, किसको कभी बटेगा. So first as you can see, पहले किसको मिलता है ये पैसा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल खुद पैसे ले लेगा, लिक्विडेशन कॉस्ट. नेक्स्ट, secured creditors and workmen dues up to 24 months. The workmen will get it. Workmen are those laborers, तो उनका पैसा. Then comes other employees. Employees अलग होते हैं. अप टू 12 मंथ्स ये लोग का पगार मिल जाएगा अगर पेंडिंग है तो, उसके बियॉन्ड का नहीं मिलेगा. तो पहले लिक्विडेशन कॉस्ट, सेकेंड इज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन ड्यूज, थर्ड सैलरी ऑफ पीपल, वो भी 1 ईयर तक अगर पेंडिंग है तो देंगे, उसके बियॉन्ड नहीं मिलेगा. आगे ऐसे फ्लो में जाएंगे, बचा तो मिलेगा. नेक्स्ट इज अबाउट फाइनेंशियल डेट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. देन कम्स गवर्नमेंट ड्यूज अप टू 2 years. Then comes any remaining dues which are there. Then the shareholders में preference shareholders, and in the last
equity shareholders. So this is the flow of payment that will be given, and in the end the dissolution order will be passed. After the money has been distributed, then we'll have something called as the dissolution. What do you mean by dissolution order? Dissolution order basically means that the company will not survive henceforth and it will be struck from the name of the registrar of companies will remove the name from the company and the company will no longer cease to be existence. Let's see from the module and we'll finish it off. Clear? So let's see, the process is pretty simple. You have to know it's section 33 to 54. First, इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन. एक बार चालू होगा तो किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? लिक्विडेटर को. लिक्विडेटर आके क्या करेगा? तो ही विल टेक कस्टडी ऑफ द एसेट्स, ही विल ट्राई टू इनवाइट क्लेम्स, वेरीफाई दोज क्लेम्स, कंसोलिडेट द क्लेम्स. मतलब कंसोलिडेट मीन्स कंबाइन करेगा, तुम्हारा इतना पैसा, तुम्हारा इतना पैसा, तुम्हारा इतना पैसा. ही विल कंबाइन द क्लेम्स, मेक अ प्रॉपर लिस्ट. देन ही विल गो फॉर द एस्टेट्स कि कंपनी के पास में एस्टेट कितना है, एसेट्स कितने पड़े हुए हैं. आफ्टर द लिक्विडेशन एस्टेट he will now start distribution of the assets to all the people, and after distribution there will be a dissolution of the corporate data, right? So now we'll go specifically section wise inside. Let's see section 33 to 54 part 3 chapter 3 part 2 of IBC deal with this. The very first attempt, हम लोगों ने क्या बोला था? Attempt is first to revive the company, is to resolve the insolvency, but if it fails then we put it into liquidation, we kill the company. Okay, and they have given you specific regulations for this. IBBI regulation, liquidation process regulation 2016. Let's see, we'll go section wise. Section B, we've written it up here. तो सबसे पहला वाला सेक्शन कौन सा है? चालू के कब होगा ये? So where the adjudicating authority, okay, believes that they have not received a resolution plan or they reject the plan, नहीं ये नहीं बराबर है, or the resolution professional intimates that the committee of creditors want to pass a liquidation order, or lastly if the corporate debtor has only contravened any of the provisions, so debtor has contravened the provision. तो चार है, let's see. Then a liquidation order will be passed and the directors or the officers will be discharged from their office. Let's see. Now they repeat it again. ये पूरा कोर सेक्शन था. सेक्शन 33 क्या बोल रहा था कि कब लिक्विडेशन चालू कब होगा? चार सिनेरियोज में. प्लान मिला नहीं, रिजेक्ट कर दिया प्लान, क्रेडिटर्स रिजॉल्व टू पास लिक्विडेशन ऑर्डर, और द डेटर हिमसेल्फ वायलेटेड द कंडीशंस. वो 4 कंडीशन में वाइंड अप. जैसे वाइंड अप करेंगे दो चीजें होगी, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा और डिस्चार्ज ऑफ द डायरेक्टर्स, एंड नो केसेस कैन देन बी फाइल्ड एंड देयर विल बी डीम्ड अ नोटिस ऑफ अ डिस्चार्ज. द नेक्स्ट इज सेक्शन 34. सो इफ वी सी 33 के बाद में कौन सा सेक्शन है? अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर. कॉमन सेंस है, जैसे लिक्विडेशन चालू होगा नेक्स्ट स्टेप में ही लिक्विडेटर को अपॉइंट करना है. फिर उसके पावर्स एंड ड्यूटीज. पावर्स एंड ड्यूटीज में क्या करेगा? वो क्लेम्स इनवाइट करेगा, सब कुछ बनाएगा. फिर लिक्विडेशन एस्टेट, कौन से एसेट्स पे कब्जा कर सकता है, किस पे नहीं कर सकता है. लेट्स सी. सो अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर, ऑल द पावर्स विल वेस्ट विद द लिक्विडेटर. The corporate debtor should extend assistance and cooperation to the liquidator. If he is not doing a good job, we can replace the resolution professional also. If he has failed to give his consent, or the board recommends replacement for reasons recorded in writing. And lastly, the plan submitted by the resolution professional was rejected for failure to meet the conditions. Next,
it will be disclosed how much he's going to get the money. Now coming to the powers and duties of the liquidator. Very, very simple, common sense, just apply your mind. What will you do when you sit in this kind of a company? Call for claims, verify the claims, take custody of all the assets, evaluate the assets, try to protect and preserve the company, represent the company, try to carry on the business as much as possible, sell the property to recover money. He will try to draw, accept negotiable instruments like basic check बनाना है, वो सब अभी liquidator ही करेगा. अगर कोई bill of exchange enter करना है, all those promissory notes he wants to sign, to take in his official name the entire administration. So all this is given. He can defend the company, settle the claims, etc. Powers of the liquidator to access the information. So if you see section 35 के साथ में कौन सा आ गया? 37, that he also has the power to access the information, which is self-explanatory. That he can access the information, any information system for the purpose of admission and proof of claim. So he can check any computer, any device, he can to verify his claim. Any credit information system, any agency, any database, he can do that. Now coming to a very important part, that is a liquidation estate. Liquidation estate is basically on what can you make the claims, what are the estates, what are the assets, what can be taken control of, what can be sold, what cannot be taken control of. So provides the creation of a liquidation estate comprising of the assets of the debtor. They have also given a list of the assets which are to be excluded from the liquidation process. So let's see. Liquidation estate shall comprise of all the liquidation estate assets which shall include the following. हम लोग ने देखा था क्या क्या inclusions थे. Movable, immovable, tangible, intangible, anything in which it has ownership. Okay. Any assets. Okay. Which the debtor has ownership rights. Which assets they may not be in possession of the corporate debtor, but they are the owners. Tangible assets, intangible assets. Next, if you go to see any assets which we have received from fraudulent, transactions which were avoidable. We had seen those fraud assets जो है, जो fraud transaction करके किसी को भी asset दे दिया, तो company can recover it back. So that will also be in the estate. Now what shall not be included? So this is an important section to write. Which is the name of the section? Remember, section 36. You need to know it by heart. 36. Even here, if you see, we are seeing section 36. That is the liquidation estate. Now, what cannot be taken control? Obviously, which are assets owned by third parties, which was kept with the company for trust, bailment, any workman compensation, all of that. Assets which were kept as security with us, personal assets of anyone, assets of any subsidiary. Okay, all of that cannot be taken. So now the liquidator, one of the most important assets is to consolidate, combine the total claims and see that liability kitni hai company ki. So he will receive and collect the claims within 30 days from the date of commencement of liquidation process. Financial creditor will submit their claim, जिसने loan दिया है. The employees will give, the suppliers will give their claims. Someone who is also a financial as well as a operational creditor. For example, claims by a creditor who is partly financial and partly operational. So I might have given a loan as well as I might have supplied goods. So to the extent of the loan given, I will be a financial creditor. To the extent of the goods and services given, I will be called as a operational creditor. So मैं वो उसके separation बन जाएगा. Self submit a claim. It will be verified. It will be admitted or rejected. If someone is not happy, they can go in appeal.
against the decision of the liquidator. Okay, the valuation will be made. Now coming to those sections of fraud. Fraud under liquidation. So fraud के sections कौन से? If you see, they start from section 43, preferential transactions. So I try to give a preference to one of the creditors. The other creditors can object and declare this transaction to be void, and any benefit given will have to be given back or will be nullified. Let's see, preferential transactions. So here they are saying related parties often possess information of the corporate data of the affairs and may collude. Related parties may already know, that the affairs of the financial affairs of the debtor ki डूबने वाली है, it's going to hit the rocks. In such a case, just before it crashes, we try to collude, we try to fraud, we try to conspire to distribute the assets. These transactions can be invalidated. अब ये इसका टाइमलाइन देखना इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा. बिफोर इट रन्स इनटू लिक्विडेशन प्रोसेस, 1 year back any fraudulent transactions can be declared void, or if it is related with two related parties, then 2 years back any of these transactions, in the past 2 years you have done any of these transactions, can be declared void. So let's see. A corporate debtor shall have deemed to given a preference to the benefit of any creditor, and it has the effect of putting the creditor in a beneficial position. एक्सेप्शंस कौन से नहीं काउंट होंगे? कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स में कोई ट्रांजैक्शन किया, अगर कोई वैल्यू ऐड हुई थी कंपनी को, so I must have done a transaction with which the company has got a value, so then it cannot be considered to be fraud because company is benefiting. Or any transaction with which the information it was registered in the information utility, so it was very much done out in the open and declared and registered, so it cannot be said to be fraudulent transaction. So let's see. It has the effect of putting such a creditor in a better position than the position he would have been if such transfer was not made. Okay. So let's see the timeline that they have given. So if it is given, so lays down a preference shall be deemed to be given if it was given to a related party during the period of 2 years preceding the insolvency date, or a preference is given to a person other than a related party during the period 1 year preceding the insolvency date. ऑर्डर्स इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, तो एक है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, दूसरे में ऑर्डर क्या आ सकता है? व्हाट आर द ऑर्डर्स? सो दे विल आस्क टू रिवर्स द इफेक्ट्स, टू पे बैक द गेन्स which is given. So it may by order require the person to transfer the property, require any property so vested and sold, and the money, if the property has been sold by that relative, then the money received should be given back. Release or discharge any security or interest created by the debtor. So any credit given, any kind of security given to you will be cancelled. So these are important. Anything done in good faith will not be coming here. Now coming to another type, that is section 45. So एक है preferential transactions. The next we are talking about is avoidance of undervalue transactions. तो undervalue transactions क्या होता है? A transaction where the assets were removed for a exorbitantly less price, for a exceptionally less price, or given away like gift to the people. So these transactions will be said to be fraud, can be avoided, can be cancelled by the court. So let's see. If the liquidator determines that certain transactions shall make
which were undervalued, he shall make an application to the authority NCLT to declare such transactions as void and reverse the effect of such transactions. So what do you mean by an undervalued transaction? So if I make a gift to a person, I give company's assets, I say you take it as gift. A jewelry company, like let's say Nirav Modi, he knew he might go into bankruptcy, liquidation, so he will give away his jewelry to his relatives for a less price or as gift. So these transactions can be declared that it's with the intention to defraud the creditors, enters into a transaction which involves transfer of one or more assets for a consideration which is significantly less than if it would have been taken in the ordinary course of business. So what is the line? It is significantly less value. Relevant period again is same कि कभी के ये transactions हो सकते हैं. If it is with a related party, then 2 years, and if it is with other than related party, then 1 year preceding the insolvency commencement date. तो insolvency commencement date इधर है, इसके पहले ही तुम सब गड़बड़ करने की कोशिश करोगे जस्ट बिफोर द इंसॉल्वेंसी. सो 2 years और 1 year डिपेंडिंग ऑन हु इट इज. तो इसके दौरान तुम कोई भी वो ट्रांजैक्शंस को रिवर्स कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि ये गड़बड़ था, आपको पता ही था कि कंपनी यहाँ पे इंसॉल्वेंसी में जाने वाली है, इसके लिए जस्ट बिफोर दैट यू ट्राई टू डिस्पोज ऑफ योर एसेट्स. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, application by creditor. So obviously the creditor will say that this was an undervalued transaction done with so and so person, please reverse the effects. So then the can pass an order to restore the position. Orders क्या दे सकते हैं? तो creditor apply करेगा और order आएगा 48 के अंदर. What orders can be passed? Again the same thing. Any person require any property transferred to be vested in the corporate debtor, release of any security given to the corporate debtor, granted by the corporate debtor. So let's say if the relative had got a security, वो security हटा देंगे हम लोग. Any benefits given should be reversed or any payment made should be given back. Now transactions defrauding the creditors. Now fraud is open-ended. It could be any kind, not necessarily undervalued transaction, not necessarily these kind of credit transactions, preference, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है. So that is also given in section 49. Here strikes any transactions entered with the intention of prejudicing the interests of the persons who had or can make a claim against the corporate debtor. So the intention is to prejudice or to put at a disadvantage or wrongfully deny the rights claims to any person. Then the authority will pass the same orders as we've seen before to restore the position which was existed before and to protect the interest of the corporate debtor. Now coming to the next one, lastly, so after we see this, then we saw transactions defrauding the creditors, and the last one now we are doing extortionate credit transactions. Now extortionate means exorbitant credit transactions. So let's say with a related party or with my associate, I would tell you supply me goods, पूरा company तुमको गिरवी. So it's a credit transaction that if I can't repay you, sell off this building. So it's a exorbitant credit. So I try to make my related party रिसीवेबल, दैट उसको जितने पेमेंट्स मिल सके मिल जाने चाहिए. तो सोचो मेरी कंपनी है, मेरे को पता है कंपनी डूब जाएगी, तो मैं मेरे मॉम के नाम पे ऐसा रख दूंगा कि इनके पास से मैंने माल लिया था और कंपनी को इनको पेमेंट करना बाकी है. आप मेरे को पूछेंगे हाँ मेरे सिस्टर को भी पेमेंट करना बाकी है, मेरे इनके को भी पेमेंट करना बाकी है, उनको भी पेमेंट करना है, तो मेरे ही घर भर रहा हूँ मैं. सो दैट काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच इज़ अनरीजनेबल और एक्सेसिव. 10 रुपये का सामान दिया और उसमें तुम्हें
रियल वैल्यू 10 रुपए की होगी, बट हम लोग क्रेडिट दिखा रहे बुक्स के अंदर कि 1 लाख का माल दिया, ताकि रिलेटिव को कुछ पैसे मिल जाए. नेक्स्ट, so even same orders can be passed to restore the position, set aside, modify the terms, require any security interest created to be cancelled, relinquished. Then after that, so this is also important, these transactions you need to know: preferential transactions, undervalue transactions, extortionate and fraudulent transactions. So these are important that you need to know. Now, moving forward, creditors, as we have seen, will have two options: secured creditors. Now, secured liquidator will call the secured creditors and tell them, what do you want to do? Do you want to sell off yourself or do you want me to do it? Then I will follow the waterfall arrangement. वैसे भी आप first ही हो, आपको मिल जाएगा. Do you want to enforce it yourself or do you want to give it to me? So the secured creditor will have two options. Either he can relinquish his rights to go on his own and receive the proceeds from the liquidator, or he say, what nonsense, it's my right, I'll go and do it myself, or realize its security interest as he would do it himself. तो उसकी जो security interest है, वो secured creditors है, he can go ahead by himself. So provides for options exercisable by the secured creditor. The secured creditor may realize the security interest outside the liquidation process or choose to relinquish his right and participate in the distribution of assets. Okay, simple. Then coming to distribution of assets. Distribution of assets, again, section is super duper important. Section 53, it talks about a waterfall arrangement. How will the assets of the liquidator be, of the corporate debtor be distributed? So they have given you the entire criteria. Priority, तो पहले liquidation cost, then the workman dues and your secured creditor, then the workman dues, then all your salary to the other employees other than workmen. Workmen अलग होते, salary people अलग होते. Unsecured, then to the government, then any debts and dues, then the preference, and then the equity shareholders. So we had seen the waterfall arrangement. Then after, in the end, a dissolution order will be passed after everything has been done. So once the debtors' assets have been wound up and completely liquidated, then the liquidator will make an application to dissolve the corporate debtor. And date of dissolution क्या होगा? It will be dissolved from the date of the order. तो जिस दिन order आया by the NCLT to dissolve it, उस दिन पे वो effect में आ जाएगा, and from that day the company will no longer survive, and a copy of the order will go to all the entities and authorities. That is it. If from here also, if you see the grounds for initiation of corporate initiation, कौन से section में है? Section 33, powers and duties of the liquidator under section 35. तो 34 में उसको अपॉइंट करते हैं और 35 में उसकी ड्यूटीज लिखी है लिक्विडेटर की. लिक्विडेशन एस्टेट कौन सा सेक्शन है? 36. ओके, देन वी आर कमिंग ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑर्डर्स दैट कैन बी पास्ड इन प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन. तो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन 43 एंड 44 में दिया हुआ है, क्योंकि एक में एक्सप्लेन करते कि वो ट्रांजैक्शन क्या है, दूसरे में बोलते क्या ऑर्डर पास हो सकता है. सो योर ऑल्सो इफ यू सी 43 में लिखा है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, और फिर ऑर्डर्स दैट कैन बी पास्ड इन प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस. ऑर्डर्स क्या होंगे? टू रिस्टोर, टू रिवर्स, टू कैंसिल द सिक्योरिटी क्रिएटेड, टू रिटर्न द सम, टू मॉडिफाई द टर्म्स, एनी अदर ऑर्डर एज ए डीम्स फिट. ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, दैट इज अ वाटरफॉल अरेंजमेंट. कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? Distribution of assets. It is given under your section 53. So this is the waterfall arrangement. That is it, and we are done with the chapter.